able to hear me? Can anybody tell me? Can anybody tell me that whether you can hear me or now? Thank you for joining. Priyanka, Himanshi, is it audible now? 13 people are watching, it seems. If anybody can message that whether the voice is working or show thumbs up, that will be great. Shall we continue? If the voice is audible, we can continue. Voice is audible. Thank you so much, Anshita. So let's continue. This is a very fast live session. I'm very happy. I did not expect a single public that will be watching. Thank you very much for supporting as a new vlogger, and I am a passionate science teacher. Let me tell you that I have done my masters in microbiology. I have completed the B.Ed also. 13 years of teaching experience, and I have taught in different CBSE schools across India. But at present, I am doing job in Planet Spark as a public speaking expert, and as I have my own YouTube channel. So please support me if you like the video. If you can put any comment like this is wrong. Thank you so much. I am so late, almost 25 minutes over when I discovered that no audio. But yes, I will definitely work on it. I will put a voice over. And let's continue from here. So crop production management. Okay, so shall we? Right. Here we have to work on and think of the farmers. Like different farmers, few farmers, they have the money. They have the technical tools. Like they know the technology, they know how to connect with people. So they can use those money to get the various modern technology, tools, etc. Right? So there can be three kinds of production: no cost production, low cost production, high cost production. These three, no cost in the sense the basic farmers, I have a land, I have my cows, and I will use my cows to plow my land. I will throw some seeds and it will grow. That is no cost production. Low cost, the farmers, I have some money, I will get some tools and a few fertilizers, I will use that. And high cost production, I am using the modern technology, the latest news. I have the modern seeds, good quality gene modified seeds, and that I can use it. So there are basically three types of production. Okay, so production practice can be three types: the no cost production for the poor farmers, the low cost production, and the high cost production. As you know, if you pay money, and if you are paying a lot of money, definitely the outcome will be more crops will be grown. For no cost, yes it will be, but not of that high yield. You cannot expect the high yield. Now, how can we work on this? Fine, I have spent, or I did not spend, but I want the yield. So what can I do? We can import the nutrients from outside, or we can water the plants or the crops regularly, which is the irrigation process, and the crop management, that is crop rotation process, intercropping or cropping patterns. So now let's come to what to do. We can work on the nutrients. These nutrients, work on nutrients, fine. Work on the water process or irrigation, we call it irrigation. And number 3 is cropping patterns. These cropping patterns, we will talk about this. Now nutrients, these nutrients we get it from naturally, from air we get the carbon. From water we can get the oxygen and hydrogen. And from the soil we get two types of nutrients: micro, macro. Micro, small quantity requirement like zinc, boron, copper, etc. Macro, we need, or not we, the crops need these macronutrients in larger quantities
It can be like NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, so on. So nutrients we get from these sources. So here let us write from air, from soil, from water. Now, if we do not provide the nutrient, if the crops are not able to absorb sufficient nutrient, then what happens? Then they cannot grow and develop to the proper extent. They cannot be resistant to the pest attack. They cannot be reproduce well up to our desired level. So these problems will be there if sufficient nutrients are not provided. Now coming to the irrigation. In irrigation, before going to irrigation, the nutrients can be natural nutrients and the artificial nutrients. So in natural nutrients we call them manure, and the artificial one we call them fertilizers. Okay, so the nutrients can be natural and artificial. Now natural is we get it from cow dung or the animal's excreta. Natural we call it manure, and the artificial, that is synthesized, that is man-made. It is produced outside in factories. Those are called fertilizers. Fertilizers. Okay. So now we are going through manure and fertilizers. So what is basically the difference? We know manure is naturally made, that is the cow dung and human or other animals excreta. Along with that, the swage, the plant waste, these are all taken in a peat. Peat means a hole you have made in the soil, and there you are putting all those swage waste and they are generating the decomposed. That is called composting peat. Composting peat, where the microorganisms, that is another topic, they will degrade those waste and that will help to create the peat. That is going to be the nutrients for the plants, naturally made. Fine. When the earthworms, they improve the process. The earthworms, they will be inside the soil and they will allow the air to pass through this compost, and that is important because air should pass through it along with the nutrients. That process of preparation of the composting in fast way with the help of earthworm, we call it vermicompost. So there we are using vermicompost. Okay, when earthworms are involved, this is called vermicompost. Artificial fertilizers, those if we are using in large quantity, that can be harmful for the crops. Where manure, the more you put, the more the crops will grow. Right? So these fertilizers are the chemical or the synthesized one, as I said to you. Large quantity not desirable, only little amount of fertilizers we can use. And also the plants quickly absorb the fertilizers. Now here one more topic is green manure. So this is clear, right? Now before moving to the next irrigation, we are going to green manure. Now what is green manure? The green manure is green manure. Green manure is when some plants or crops, for example sun hemp, guar, lobia, lentils, they have sufficient nitrogen and phosphorus within them. So they are rich source of nitrogen and phosphorus. So first, the intelligent farmers, the smart farmers, they grow these kind of plants first, so that these nitrogen, phosphorus, this kind of nutrients get into the soil and being absorbed. After that, they are growing another kind of crops. Okay, they can utilize the nitrogen and phosphorus rich soil nutrients.
So the food, the nutrient is ready. So that process is called green manure. Sunhem, cowpea, lobia, these are few examples. Sunhem, cowpea, lobia, they are rich in N for nitrogen, P for phosphorus, and that are coming to the soil. Okay, so green manure is done. Then what is organic farming? We have heard organic food, right? Organic mantra, like supermarkets are available where they are saying we are selling organic food, fruits and vegetables. Those are without using any fertilizers. Yes, organic farming is just like that. So organic farming, is the writing clear? Please, anyone? So if the writing is clear, the board is visible. If can anybody tell me, that will be great. So if the board is visible to you clearly, Anshita and others, those who are there, if the writing is visible, my size is okay, how I am writing? I think yes, we should continue. I am happy. At present 20 people have joined and watching live. I am super happy. Yes. So organic farming is basically when the farming is doing without the using of chemical fertilizers. No use of fertilizers. Only using the manure, doing in an organic way. And where you can, organic wastes are produced. Now blue-green algae, you know, BGA, blue-green algae, these are used to produce this organic waste. Biofertilizers and very common neem leaves, turmeric, these can be used. You must have seen instead of naphthalene ball, we put the neem leaves also in the woolen sweaters and all woolen clothes to keep it away from the pests, insect attack, right? To remove the termites, to prevent it from the termite attack. So neem leaves, turmeric, these are the examples of organic farming. Like we were talking about, no fertilizers. Here, no fertilizers. Organic farming. BGA, blue-green algae, neem leaves, turmeric, etc. So organic farming is done. Now we are moving to the irrigation. That is the second part. So number 1 is nutrient. Number 2 is irrigation. We know that water is very important source for the crops or the plants growth. Most of the land in our country and others are rainwater fed. The rain during the monsoon time, the farmers are very happy, the crops can be grown, but all the time we cannot expect the rain or monsoon. We have the different seasons, so we have to plan for summer time, winter time, isn't it? When the rain will not be there. So in that case, we have to think for artificial way or how smartly we can get the water. So our second point will be irrigation. That is how to feed water to the crops. Here I am writing mostly rainwater. Yes, mostly rainwater. Other than that, we can get it from well. This well can be bore well or tube well. How many of you know about bore well and tube well? Bore well, this one, pulley. Tube well, pumping. Groundwater we are getting with a pump, that is tube well. Bore well with a pulley, that is a simple machine. With pulley we are getting from the bore well. Other than well, there can be canals. And these canals, you know what happens, the canal is going through the crop area, the agricultural farmland. From the canal water, different pipes that will transfer the water from the canal to your crops. That is use of canal. There can be storage tank. This tank,
words like reservoir, water reservoir. When we need from the reservoir or the tank, the water will go to the reserve place. Again with the help of pipe. There can be river lift. Now what is river lift? Luckily, a river is flowing through near the farmland. From there, the big pipes through which the water can be lifted from river to the agricultural farmland. That is river lift. And there can be sprinkler. From the different holes will be there from the sprinkler. Is a tube and the water will be like it can rotating sprinkler where the water will be throwing in the whole farmland. So that is the sprinkler. Rainwater harvesting, like you can have your big vessel to collect the rainwater and later on you can use those. So rainwater harvesting. And rainwater harvesting, and one more, river shed, watershed. Watershed in the sense the hills, the land, that is the high altitude and the low altitude. So in case the slope is made like this. Now from here the rainwater is coming and they are getting stored into the down part, and from there the water will go to the farmland, right? So rainwater harvesting, and last but not the least is watershed. So these are the plans by which the water will be fed to the farmland. Okay. So now third one, if I am going little faster, please let me know. With your interest, I will try to I will discuss the question answers, and those who are new, again welcome to Bratati science class, and please go through the playlist where you can get class 7, class 8, class 9, all the chapters are there. Okay, now number 3, that is the cropping pattern. Cropping pattern. Cropping pattern can be 3 types: mixed cropping, intercropping, crop rotation. Mixed, inter, crop rotation. Crop rotation. Mixed cropping, in the same farmland we are sowing or harvesting more than one type of crops. 2 or more crops we are harvesting or we are sowing in the same piece of, actually we are cultivating in the same piece of land. For example, this is my farmland. Here tomato, that is potato and tomato are grown together. So here I can use my potato plus tomato, same land, mixed farming, mixed cropping. Intercropping is, suppose I am taking this potato in a row, tomato in a row, again potatoes in a row, tomatoes in a row. Something is different, right? Intercropping means we are following a pattern, either column wise or row wise, same kind of crop. Here mixed crop, all are mixed. Here a potato, here a tomato, here a potato, here a tomato. Here we have a specific pattern in intercropping. In crop rotation, again the same piece of land is being used, but the types of crops are being rotated. One crop is harvested, second crop is sown. Again second crop is harvested, third crop is sown. For example, moong dal, moong. After moong we will not again cultivate moong, instead we can cultivate wheat. After wheat we will cultivate paddy. Now see the requirement, why like this? The moong requirement is different from wheat, the requirement is different, paddy requirement is different. Paddy needs a lot of water, so they will be kharif crops, as you know. So this is kharif crops, we know during the monsoon season we get it. This we get zaid crop, and this is again the rabi crop. So as the whole land is being utilized throughout the year by
by cultivating different kind of crops. Is the cropping pattern clear? How many are there now? 10 are there. Okay, anything you can write in the chat. Anything? Hello, Rupa. Okay, so I was just taking comment for some time. So crop production management is done. Now, crop protection management is our third one. Third one, we are moving to crop protection. That is when we are storing the crops, then what we should do, what to follow, so that we can avoid the attack of pests, attack of weeds, etc. So now to the third one, crop protection management. That is the third one, crop protection management. Okay, so here first thing we have to control the weed. WEED. Weed is the unwanted plant. We want to grow the sunflower. There we don't want the grass to grow, because there will be a competition. The unwanted plant will absorb the nutrients from the soil. Correct? So we have to control the weed. We have to remove those plants. So either manually we can pluck them out, or we can use 2,4-D atrazine to remove the weeds. The first thing is unwanted plant removal or weed control. For that we can use atrazine 2,4-D. 2,4-D. Pesticide or insecticide for disease control. Now, disease, why disease? We know microorganisms like bacteria, virus, fungi, they can attack us. So, to control, not us, we are talking about the crops, they attack the crop as well. The microorganisms, the very small tiny organisms that we cannot see with our naked eyes, those are called the microorganisms. So, the fungi, when they are attacking the crop, we can use fungicide. We can use different pesticide, but keep it in mind, excess use of these are very, very harmful for our farmland. So we can spray the compounds of sulfur, mercury to avoid this kind of disease. Now you may ask how to know that whether I will use the fungicide or all. There are the common solution that will help you to get rid out of all kind of microorganisms. So here what we can do, we can spray sulfur or use pesticides, fungicide, etc. Okay, and number 3, before storage, what we should do? Before storage, you dry it completely. Same apply for when we are putting the jams, jellies in the closed airtight container, right? So before storage, the seeds or that will be dried completely. They will be fumigated. That is, we have to spray through the clean, dried and fumigated. The fumigation is the smoke that will help to remove the moisture present in them. The main thing is you have to store them before correctly, dry them, clean them, fumigate them. After then you can store. ठीक है? So आप ये भी बता सकते हैं जो आप हिंदी में चाहते हैं. अगर मैं लाइव कर रही हूँ तो I can sometimes speak in Hindi if that helps. Okay, you can write in the comment box if you want the bilingual language like Hindi and English together, that I will help you.
So crop production management is done. Now plant source of the food is completely we have finished. The second source of food, what did I say? The animal. So let's move to animal husbandry. नहीं, animal का husband नहीं. Animal को मेनली द फार्म एनिमल को प्रॉपर केयर करके उसको अच्छा ब्रीड करके अच्छा खिला के सो दैट दे विल गिव द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द पोल्ट्री ऑफ द फार्म एनिमल्स, उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री. तो चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री में नेक्स्ट सोर्स ऑफ फूड, दैट इज द एनिमल सोर्स. बोर्ड क्लियर है कि नहीं? व्हाट आई एम राइटिंग, द साइज इज ओके और नॉट, ये भी मुझे बताइए इन द कमेंट बॉक्स. एंड दिस इज द फर्स्ट लाइव सेशन. दोज हु आर जॉइनिंग द फर्स्ट लाइव सेशन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू हु आर जॉइनिंग दिस फर्स्ट Bratati science class live class which is being happened on this 7th of November. Okay, so now we are moving to animal husbandry, which is, as I told you, I'm not writing again. Mainly we are taking care, scientific process of taking care of farm animals. So they are breeding, they are feeding these things. We have to take care to get the maximum productions of them. Under animal husbandry there are cattle farming, poultry farming, fish production, beekeeping. These are the four main part subdivision that we are going to learn. Cattle are the farm animals like sheep, cow, goat. We get the maximum of meat, we get the milk from them. So in this cattle farming, there are two types. Milk producing cows, we may call them, those are the females, right? They give the maximum milk to the feed for feeding their baby, and excess milk for feeding their calves, and the excess we collect, right? So those animals are called milch animals, MILCH. Milch are the female which are milk producing animal, cattle. And second type of cattle will be draught labor. Mainly they are used in the plowing. They do the labor, right? The farmers use them for doing the plowing and labor. They are the male version. Now if I combine these two, suppose I want a cross between foreign or exotic breed like Jersey and the local breed, for example Sindhi. Now if Jersey and Sindhi are crossbred, you know, hybridization that we spoke about, if these two breed are crossed, we get a product and that can have a longer lactation period. Lactation period is milk producing period, and they are physically strong to act as a draught labor, right? So one by one, first we are into the cattle farming, where we are seeing that cattle farming are milch animal, female, milk producing cattle, and draught labor. These are the male version, and they help in plowing and doing the hard work. Now as I was telling, the cross, we can do the cross between foreign Jersey exotic breed and Sindhi, that is local breed. Then the benefit we get more lactation period, and physically strong. So these two characteristics we get by cross between this exotic or foreign and the local breed. Now to get this, it's not so easy. We have to look on their food requirement.
they can have roughage food or concentrate food. Roughage food of more fiber, concentrate food of less fiber, more nutrients. Also, we have to look for the shelter. We are providing them to take rest. That should be clean, without any dirt, so that the productions we get is pure, without any polluted or a mixed one. Right. Let's move to poultry farming. Second one. Mainly I am following NCERT class 9 science. I am following NCERT books only. And as you know that class wise I am going. Class 7 is done. Class 8 all chapters are done. Class 9 today we will finish all chapters. Next we will start class 10. So stay tuned. Those who are new, thank you once again for joining, supporting. It means a huge inspiration to me to continue my classes. और मैं हिंदी में भी बोलूँगी, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बोलूँगी ताकि मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड, सबको काम पे आ जाएगा. जिसको इंग्लिश नहीं आते, मैं इंग्लिश में क्यों बोलती हूँ, ताकि आपका जो बुक है ना उसमें पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है. इवन आंसर्स यू हैव टू राइट इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में ही लिखना है. इसीलिए इंग्लिश मेरा मेन लैंग्वेज आई यूज. बट अगर मैं लाइव क्लास ले रही हूँ तो डेफिनेटली मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगी. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री क्या है? हेन है, डक है. और इसका क्या काम है? इसमें भी दो टाइप का पोल्ट्री होता है, जो बड़ा बड़ा एग देते हैं और जिसका मीट लेते हैं. सो ब्रॉयलर एंड लेयर्स. लेयर्स टाइप का जो पोल्ट्री होते हैं, दे गिव मैक्सिमम ऑफ लार्ज एग्स. सो जिसको एग देना है, देयर साइज कैन बी स्मॉलर, दे कैन बी स्मॉलर बट दे गिव देम लार्ज एग्स. और जो ब्रॉयलर होते हैं, आपको पता ही है जब आप चिकन स्टोर में जाते हैं, ब्रॉयलर चाहिए मुझे. ब्रॉयलर मतलब उसको दे आर स्ट्रॉन्ग, they are heavy and large so that we get the maximum meat from them. ये जो layers होते हैं, they need adequate space and lighting, proper condition to grow. और जो ब्रॉयलर होते हैं उसको अच्छा खिलाना पड़ते हैं, so that they need the they get all the conditions to grow faster or they grow in huge. ठीक है. और layers को कुछ भी खिलाने से नहीं होता, they have a food restriction, limited वही देना पड़ता है. बट ब्रॉयलर के लिए मस्ट बी द फूड मस्ट कंटेन मैक्सिमम ऑफ प्रोटीन, क्योंकि आपको पता ही है प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है. ऑलराइट, सो ठीक है. तो अभी इसमें भी हम क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं. क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं बिटवीन द फॉरेन एंड द लोकल ब्रीड. अगर हम क्रॉस कर दिए तो क्या मिल सकते हैं? ऐसे ब्रीड बनाए हैं जिसमें द चिकन का क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ चिकन इज मोर, द नंबर ऑफ चिकन इज मोर, पेरेंट कैन बी डॉग बट दे आर गिविंग द लार्ज साइज ऑफ एग हो सकते हैं, और हाई टेम्परेचर और सैलिनिटी टॉलरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट श्योर अबाउट द वेदर कंडीशन. आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग बनना है, यू हैव टू बी डिजीज रेजिस्टेंट, आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ जाओगे. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अस, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोल्ट्री. लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, जिसको उतना कुछ देने का जरूरत नहीं है, उतना दिमाग में रख के कहाँ सोना है, कहाँ खिलाना है, उतना नहीं चाहिए. लो मेंटेनेंस, कॉस्ट इफेक्टिव सोचो, स्पेंड लेस गेन मोर. ठीक है. सो ये होता है ब्रीडिंग. चलो पोल्ट्री के बारे में बोल रहे हैं. पोल्ट्री टू टाइप का होते हैं, जैसे कि लेयर्स होते हैं एंड ब्रॉयलर्स होते हैं. नाउ लेयर्स से क्या मिलते हैं? लेयर्स गिव्स अस एग and broilers gives us meat. Difference कर देते हैं. That is layers need specific temperature, मतलब ये पूरा environment जो है उसके लिए specific condition चाहिए. So it can be the specific temperature, adequate space to grow. इसके लिए उतना नहीं चाहिए. They need food requirements, food supplements to grow fast. इसको fast grow होने के लिए जो चाहिए वो चाहिए. Layers can be dwarf and broilers should be huge. So they can be dwarf. They should be huge because they give us meat and they give us egg. ठीक है. So अभी दो difference किया.
एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड करके क्या मिलेगा? मोर नंबर ऑफ चिक्स, दो ऑफ पैरेंट बट लार्ज नंबर ऑफ एग्स, ये सब मिलने वाले हैं when we are doing cross breed. So इसीलिए cross breed होता है. If you go to the shop and you will find that there are the cross breed between the foreign breed and the local breed. इसमें भी cross, that is the cross between the foreign breed and the local breed. उससे क्या मिलता है? उससे we get number of good quality chicks मिलता है. chicks. दो ऑफ पेरेंट दो ऑफ हो सकते हैं बट एग्स मोर एंड लार्ज साइज. और क्या मिलते हैं? डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी, डिजीज रेजिस्टेंस कर सकते हैं. हाई मोर्टेलिटी, ज्यादा दिन रुकेगा. हाई मोर्टेलिटी, जल्दी मर नहीं जाएगा. तो high mortality, these are the few features characteristics we get when we do cross. So cross का फायदा है, hybridization का फायदा है. कैसे जा रहे हैं क्लास? कोई बताएंगे मुझे प्लीज? मैम देन द प्रोजेनी स्टेराइल और नॉर्मल. ओके, मैं आपका रिप्लाई बाद में करती हूँ. हर्ष जगतिया. ओके, सो ऑल द कमेंट्स यू प्लीज राइट हियर. और कैसे जा रहे हैं क्लास वो भी मुझे बताइए कि हिंदी ठीक है कि इंग्लिश ठीक है कि बाइलिंगुअल ठीक है, कैसे जा रहे हैं वो बताइए. आपका सभी कमेंट्स में जो भी क्वेश्चन डाउट्स है वो मैं आपको बाद में रिस्पॉन्ड जरूर कर दूंगी. ऑलराइट, सो ये था पोल्ट्री फार्मिंग. नाउ फिश प्रोडक्शन. फिश प्रोडक्शन इज द नंबर 3. सो थर्ड में हम जा रहे हैं फिश प्रोडक्शन. कोई बता सकते हैं कि फिश का जो कल्चर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मतलब इसका जो स्टडी होता है ना, जो लोग फिश के बारे में स्टडी करते हैं उसको पीसी कल्चर बोलते हैं. राइट, पीसी कल्चर मतलब स्टडी ऑन फिश. सो फिश प्रोडक्शन में कैसा क्या होता है? अभी फिश को कैसे आप पकड़ सकते हैं? दो टाइप होते हैं. नेचुरल प्रोसेस जो कैप्चरिंग फिशिंग एंड द कल्चर फिशिंग. Capture fishing in the sense like you are going with a boat and you have a fish net. You are putting your net and you are getting maximum number of fish. That is a capture fishing. Culture fishing when you are putting the eggs of the fish artificially, manually you are putting or with the help of any machines. And from there you are culturing the fish. वो होता है culture fishing. That is farming of fish. Now, type of water के हिसाब से the fish can be marine water fish and the fresh water fish. आपको पता है. So marine water जो है that will be grown in the sea water or saline water, जिसमें भी coastal होते हैं और offshore होते हैं. coastal जो coast के आसपास में मिल जाते हैं और near the shoreline, और offshore जो होता है जिसको आपको बोट लेके बीच समुद्र में in the deep sea you have to go for collecting, for grabbing the fish. So coastal का near जो होता है, ठीक है. So type of fish दो टाइप का होते हैं, right? So fish type of fish होता है marine fish और होता है fresh water fish. ठीक है. अभी जो marine fish, this marine fish, this can be of two types, जिसको coastal area में मिलते हैं and that is in the offshore में मिलते हैं. sea water में रहते हैं. marine मतलब sea water में रहते हैं. fresh water जो है मीठा पानी में रहते हैं. तो coastal में क्या मिलते हैं? we get pomfret, we get bombay duck, लोटिया बोलते हैं ना, bombay duck, that is लोटिया, pomfret. और क्या मिलते हैं? और टूना, सार्डिन, मैकरेल भी मिलते हैं. टूना, सार्डिन ये सब मिलते हैं कोस्टल एरिया पे. और ऑफशोर में डीप सी में जाके तो हाई इकोनॉमिक फिश कुछ मिलते हैं, जैसे कि मुलेट्स, भेटकी, ऑयस्टर. इसमें आपको मुलेट्स, भेटकी, ऑयस्टर ये सब मिल जाएगी. आपको बीच समुद्र में जाना पड़ेगा. सो दीज आर द टू टाइप्स, कोस्टल एंड ऑफशोर. ठीक है, मरीन एंड फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर में कौन से टाइप का फिश मिलते हैं?
रोहू, कातला, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और क्या कॉमन कार्प, ये सब मिलते हैं इसमें। तो इसमें मिल जाएगा रोहू, कातला। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक फिश? आई लाइक फिश, बीइंग अ बंगाली आई डेफिनेटली लाइक फिश। और ऑल टाइप ऑफ कार्प्स इसमें मिल जाएगा फ्रेश वाटर में। ठीक है, अभी कहाँ से फिश को उठाना है और उसके हिसाब से दिस इज एज आई टेल यू कैप्चरिंग फिश एंड कल्टीवेटिंग और फार्मिंग फिश। ओके, ये दो टाइप का फिश का कल्चर होते हैं। कैप्चरिंग फिश, आप फिश को कैसे मिलेंगे? कैप्चर करो, कैप्चर के लिए कैप्चरिंग फिश, कैप्चरिंग फिशिंग, इसके लिए आपको बड़ा फिश नेट होना है। एंड यू कैन हैव इको साउंडर्स। ये क्या होता है? इको साउंडर्स इज द मशीन और टूल जिसमें जो वाइब्रेशन जाता है समुद्र पानी के नीचे जाके दैट कम्स बैक। इफ यू गेट द साउंड बैक, आपको पता चलेगा कि इसमें ज्यादा फिश है, यू कैन पुट योर फिश नेट देयर। सो वो होता है इको साउंडर्स। और जो होता है वो है कल्टीवेटिंग फिशिंग। और कल्टीवेटिंग फिशिंग का मतलब है फिश फार्मिंग। ठीक है, मतलब फिश का कल्टीवेट कर रहे हो, आप एग्स देके उसको कल्टीवेट कर रहे हो। अभी कल्चर फिशिंग में मतलब ये जो कल्टीवेटिंग फिश है इसको बोलते हैं कल्चर फिश। इस कल्चर फिश इसमें होते हैं मैरीटाइम एंड एक्वाकल्चर। मैरीकल्चर, एक्वाकल्चर, वो क्या होता है? मैरीकल्चर होता है, एक्वाकल्चर होता है। मैरीकल्चर दैट इज कल्चर ऑफ फिश इन द मरीन वाटर, सलाइन वाटर, सी वाटर। और एक्वाकल्चर जो होता है दैट इज कल्टीवेटिंग फिश और फार्मिंग फिश इन द फ्रेश वाटर। तो इसमें आता है मैरीकल्चर और एक्वाकल्चर। ठीक है, ये मैरीकल्चर जो सलाइन वाटर में होते हैं, सी में होते हैं, और एक्वाकल्चर जो फ्रेश वाटर में बनते हैं। ये है मेनली डिफरेंस। ठीक है, अभी एग्जांपल भी दे दिया। अभी दो टाइप का और फिश कल्चर हो सकते हैं, इंटीग्रेटेड फिश कल्चर एंड कंपोजिट फिश कल्चर। तो वो क्या होता है? ये हो गया कैप्चरिंग फिशिंग, कल्चरल फिशिंग। कल्चर फिशिंग में होता है मैरीकल्चर, एक्वाकल्चर। अभी जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप, इंटीग्रेटेड एंड कंपोजिट फिश कल्चर। मैरीकल्चर और एक्वाकल्चर तो हमने देख लिया, उसके बाद आते हैं इंटीग्रेटेड फिश कल्चर में। वो है थर्ड टाइप जो है इंटीग्रेटेड। नाम से कुछ पता चल रहा है? इंटीग्रेटेड फिश कल्चर क्या होता है? इंटीग्रेटेड मतलब हम इधर पे पैडी को फार्म कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल पैडी ग्रो कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं। पैडी में वी नो दैट वी नीड अ लॉट ऑफ वाटर इन इट, इतना कि स्टैग्नेंट हो जाए। उसके साथ उसमें ही हम कुछ सीड्स ऑफ और क्या बोलते एग्स ऑफ फिश को लगा दिया और उसमें फिश भी ग्रो हो रहा है। सो पैडी एंड फिश एक साथ फार्मिंग हो रहा है, कल्टीवेट हो रहा है, इसको हम बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। जिसमें सोचो पैडी भी है, पैडी भी कल्टीवेट हो रहा है, उसके साथ फिश भी कल्टीवेट हो रहा है ना? इंटरेस्टिंग। एंड द फोर्थ वन इज कंपोजिट, कंपोजिट फिश कल्चर। ये क्या होता है? इसमें बहुत मजा है। ये कंपोजिट फिश कल्चर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश को लेता है हम। एक वाटर बॉडी है, एक पॉन्ड है, पॉन्ड का 3 सरफेस है। एक है ऊपर का सरफेस, द टॉप लेयर, एक है बॉटम लेयर, एक है मिडिल लेयर। ऐसे फिश चुनना है जो डिफरेंट लेयर से खाना खाते हैं। दे गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स। सो इसमें क्या होता है? सरफेस फीडर्स जो ऊपर की जो कीड़े मकोड़े देंगे या कोई भी फूड देंगे, फिश फूड देंगे। यू कैन ऑल्सो सी दिस इन द एक्वेरियम। आपका खुद का एक्वेरियम है तो भी आप देखेंगे कि इफ यू पुट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, सब एक जगह से नहीं खा रहे। सम आर ईटिंग फ्रॉम द सरफेस, सम आर ईटिंग फ्रॉम द बॉटम, जो कभी भी रॉक्स के आसपास ही रहते हैं, है ना? और जो बीच में रहते हैं उसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर और कॉलम लेयर और कॉलम फीडर्स। तो इसमें 3 टाइप का होते हैं फिशेस। कंपोजिट फिश कल्चर में एक होते हैं सरफेस फीडर्स,
सरफेस फीडर्स जैसे कि कातला, ये सरफेस से खाते हैं। एक होता है कॉलम, ये आपको कॉलम भी बोल सकते हैं और मिडिल फीडर्स भी बोलते हैं, जिसमें होता है रोहू, वो बीच से खाते हैं। और होता है बॉटम फीडर्स जो नीचे से खाते हैं, उसमें कार्प रहते हैं, मृगाल रहते हैं, कॉमन कार्प भी रहते हैं, मृगाल। ठीक है, सो देखो इससे व्हाई दिस इज इकोनॉमिक, इसमें पूरा वाटर हम यूटिलाइज कर सकते हैं, डिफरेंट फिश भी ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज कंपोजिट फिश कल्चर। सो नाम से पता चलता है इंटीग्रेटेड में दो टाइप का कल्टीवेशन एक साथ हो रहा है। कंपोजिट में द फुल वाटर बॉडी इज बीइंग यूटिलाइज्ड। कुछ डाउट है कैसे जा रहे? ओ टाइम इश्यूज है आई थिंक, अभी लोग भाग रहे हैं। Yes, it's lunch time. So yes, definitely I will keep it in mind. अगर हो सके तो those who are there, can you write in the comment box which is the preferred timing for taking live class? If you guide me, I will just keep it in mind. If you want morning 10 a.m. or you want night 10 p.m. Morning 10 a.m. या night 10 p.m. please let me know. Then बी कीपिंग है, बी कीपिंग इज एपीकल्चर। एपीकल्चर और बी कीपिंग क्या होते हैं, जिससे वी गेट द मैक्सिमम ऑफ हनी एंड वैक्स। सो हनी प्रोडक्शन, वैक्स प्रोडक्शंस वी कॉल इट बी कीपिंग। नाउ व्हाट इज एपियरी? द प्लेस वेयर द बीज आर केप्ट सेफली फॉर टू गेट टू फेच देयर हनी एंड द वैक्स। कुछ कॉमन बीज है जैसे कि एपिस करोना इंडिका, केपिस डोर्साटा, केपिस फ्लोरा, आई एम टेलिंग द साइंटिफिक नेम इसीलिए देखना पड़ रहा है। एपिस मेलिफिशिया दैट इज द लार्ज स्केल ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन होते हैं, एंड द हनी कलेक्शन कैपेसिटी इज मोर इन दिस काइंड ऑफ एपिस मेलिफिशिया में। और स्टिंग जो होता है ना, फुटाते हैं, सो स्टिंग इज नॉट उतना हार्मफुल नहीं है। आई गॉट अ बी स्टिंग, डिड यू गेट अ बी स्टिंग? Oh, that was so lame, that will be red, and you have to put what? You have to put the alcohol definitely to keep it away from the sting, and also you can put sodium bicarbonate, उसका जो paste होता है that paste you can put to get it reduced. पानी obviously देना पड़ेगा and it will take some time, then it will be cured. Now stay in the beehive. beehive में बहुत देर तक रहते हैं। किसकी बात में बोल रही हूँ? Apis mellifera, mellifera. So इसका नाम है, so last topic that is the beekeeping, that is the fourth one, beekeeping. आजकल this is the golden revolution, जो honey production, आजकल this is the cost effective, so most of the farmers they do both, beekeeping भी कर रहे हैं और agricultural भी नजर दे रहे हैं। So beekeeping is basically to get the maximum production of honey and wax. Apiary क्या होता है? Apiary is the place where honey bees are, the storage of honey bees or shelter of the honey bees. We can say the shelter of honey bees. ये होता है apiaries, और जिसका नाम मैं बोल रही हूँ वो है Apis mellifera. Apis mellifera, Apis mellifera जो इकोनॉमिक, जो हाई इकोनॉमिक है, क्योंकि इसका स्टिंग उतना जबरदस्त नहीं है। फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे विल बी देयर इन द beehive, they can reproduce, they can breed faster, so these are the qualities, that's why Apis mellifera is highly economic. Now ये जो क्वालिटी ऑफ हनी एंड वर्क्स होता है, मेनली द टेस्ट ऑफ हनी किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन पास्चुरेज। मतलब क्या होता है? एपियरी कहाँ पे है, बी हाइव कहाँ पे है, शेल्टर किधर पे है, द बी विल गेट द नियर बाय फ्लावर्स, उसका नेक्टर, सो द फूड दे विल टेक, the product will also be tasty depending on the which flowers they are able to take the nectars from. इसको बोलते हैं pasturage. So इसको depend on the surrounding and the vegetation. ठीक है? So the quantity of nectar they are getting, the quality of the flowers they are getting, depends on that. All right, so we are done. Thank you so much. I will clean the board. The recap, I'm not going in detail. Mind map I always do at the end of the chapter, so that it's like a recap.
Those who have joined to my first live sessions, I will be grateful for them forever for encouraging me. Okay, so a mind map. And initial time, I know that initial 25 minutes, no voice was there. I will definitely do a voiceover to compensate that. Mind map, today we have learned about why food, what are the food resources, how to improve the resources, the practice. Okay? Then we know agriculture in detail we have discussed, was the agricultural process. Then we move to animal husbandry. In animal husbandry we have discussed about cattle farming, poultry farming, fish production and the beekeeping. So those who are new to the channel, request you to go through the playlist. If you like any part of the video, please hit the like button. If you have not subscribed yet, it will be great if you subscribe the channel. See you in the next live session. Till then, take care, stay healthy.